Namaskar, Jai Hind. This is the time to read your story. This is a day 12 of 15-day PPDT challenge, and this was the picture just shown yesterday. You can see this is a female, there is a two male. This man is having a hand in his pocket. Seems to be slight. This one, then the front, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है. Maybe child, maybe you know, neighbors का बच्चा हो सकता है, colleague हो सकता है. It depends on how you take it on. Or she's holding something in her hand. And they are talking to each other. Let me see how do you ever make a story. And ये देखो clear ये भी दिख रहा है. You can see the curtain are folded aside, so it means it's coming from inside. और बाहर ये कुछ लगा हुआ है जनरली इधर में भी ड्राइंग रूम हो सकता है कुछ है. ये what kind of story you have written. The first story coming. Ram was a 16-year-old student who lived with his mom and dad in the village of Uttarakhand. One day he saw a notice at his school that a competition is going to be organized by the school and top 5 students will be selected for the free fee service for their higher studies. He prepared well and took help of his parents and friends, and the day come he did it well in exam as a देखो मैं ये तो नहीं बोलूँगा थीम अच्छी है बेकार है क्योंकि आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन आप देखो आप क्या कर रहे हो आपने मैं रोज एक ही चीज बोल रहा हूँ एंड दिस इज द मिस्टेक व्हिच यू गाइस आर डूइंग कि उसके एग्जाम में हायर स्टडीज के लिए फी का माफ हो जाएगा तो उसने पेरेंट्स का हेल्प लिया फ्रेंड का हेल्प लिया एंड देन वो टाइम आ गया व्हेन का रिजल्ट अच्छा चला गया। क्या किया आपने उसको करने के लिए आपने क्या किया? एक्शन्स तो कुछ है ही नहीं। सोचते ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा स्लाइटली wannabe kind of a story. So I will say no to this. Three character male 20, 35, 32, mood positive, making arrangement for Ganesh Utsav. Is appeared to make arrangement for Ganesh Utsav this year. He first made a rough calculation of the spending. Then he went to door to collect the money. He went to Pandit ji for दुर्गा पूजा मतलब आपका स्टार्टिंग ही देखो एक कैलकुलेशन से हो रहा है, ठीक है? एंड देन ही वेंट टू द मार्केट विद हिज फ्रेंड, बुक्ड एन आइडल ऑफ लॉर्ड Ganesha, booked the drummer, did purchase of decoration and the item required in puja and bhog and returned home. He with his family started building and decorating the tent in the society compound. Next day, he went to take the idol, welcome Ganesh. Society did Pandit ji offer. मतलब what is it? कुछ celebrate करना है and then how they went on. The story is good. Theme is के थीम में कोई इश्यू नहीं है बट द ओनली थिंग इज कि आपके जो एक्शंस है वो कहीं और से स्टार्ट हो रहा है पहले तो आप कलेक्शन से हो रहे हैं हाँ कुछ डिटेल प्लानिंग है दैट आई से कि मनीष यस देयर सम डिटेल प्लानिंग गो अहेड विद इट लेकिन व्हाट इज एंड आई मीन मे बी व्हेन यू से इवेंट टू डोर कलेक्शंस तो मे बी ये उसी के बारे में आप दिखाना चाहते हो कि कलेक्शन है तो रिलेवेंट है डिटेल प्लानिंग है द ओनली थिंग इज कि आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट एंड पूरा का पूरा जो स्टोरी है किस बेसिस पे है कि हाउ मच मनी यू कलेक्टेड राइट इवन डोर टू डोर स्टार्टिंग आपने कैलकुलेशन से किया तो टू मच ऑफ दिस रादर देन खुद से क्या किया उसने started building and decorating the tent in the society compound this line is the one where this coming out कि उसने कुछ स्टार्ट किया that's all so I will say a average story okay let's go to another story let me see if I got some good story today हाँ गुड तो नहीं बोलूंगा बट ये मिस्टेक अवॉइड करना है आपने लिखा नंबर ऑफ कैरेक्टर थ्री ठीक है रोहित नैंडे ना ब्रिलियंट स्टूडेंट वो नहीं लिखना है ब्रिलियंट स्टूडेंट और उसके काम से जब मैं खत्म करूँ मुझे लगना चाहिए कि यस ही इज ए ब्रिलियंट आई मीन विच सेंस यू वांट टू से ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग है या इंटेलिजेंट है या डेडिकेटेड है जो भी आप बताना चाह रहे हो या वो उसके स्टोरी खत्म होने पे मुझे खुद आना चाहिए ना कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में एडजेक्टिव लगा दोगे ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली एक कहावत है ये वो वाली चीज है he started preparing for board exams smartly board exams smartly so he made study schedule and followed after completing the syllabus he spent his time in solving sample paper PYQs and attempted many mock tests as the exam approached he spent countless hours in study he countless hours in study उसने अगर बना लिया टाइम टेबल उसको फॉलो करो he performed well in exam in result day he was at his friend's house when he checked his result he was overjoyed to see top in district, he returned home to share this good news with his parents. They were very happy and her mother blessed him with आरती। देखो एक आपको मैं आज हिंट देता हूँ अ, अच्छा जभी भी आप कोई भी स्टोरी स्टार्ट करो ना अगर मेरे को स्टार्टिंग के 15-20 सेकंड्स में नहीं पता लगा ना कि आपने थीम पे बनाई है कि नहीं बनाई है तो आई मे नॉट टेक इट गो अहेड बिकॉज कहीं ना कहीं ये तो लगना चाहिए कि आपका थीम क्या है अब आप
मैं समझ गया सेलिब्रेशन है लाइक यू गॉट अ गुड रिजल्ट एंड यू सेलिब्रेटिंग इट मे बी अ थीम बट मुझे स्टार्टिंग के 15 सेकंड्स में और या 3-4 लाइन में अगर नहीं पता लगा तो देन यू नीड टू लुक बैक इनटू देयर ओन स्टोरी कि क्या ये हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। नंबर ऑफ कैरेक्टर 3, 2 मेल, 1 फीमेल, मूड पॉजिटिव, Rohan is 23-year-old boy from Rewari, Haryana. His graduation from DU and after his graduation started preparing for bank exam. After 6 months preparation, appeared for pre-exam वही मतलब wannabe kind of thing. His father wish him good luck and his mother feeds him garden sugar before going for exam. That's a very actual में what happens when you go for exam ये सब होता है। आप ये सब यूज़ कर सकते हो लेकिन पता है जब तक कुछ टेक अवे देखो आपको ये देखना है कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड इट्स अबाउट स्टोरी सिंपल होना चाहिए बट व्हाट इज़ द टेक अवे फ्रॉम एज़ एन असेसर मुझे क्या मिल रहा है आपका कि व्हाट आई एम गेटिंग इट फ्रॉम दिस रोहन पास्ड हिज एग्जाम एंड बिकम you in Punjab National Bank. That's all I'm getting it. Okay, somebody asking, are you from Rewari? In this story, I perceive three characters, two male, one female. Rahul was 20-year-old and his father Rakesh, 45-year-old, and mother Renu, 43-year-old. Rahul was preparing for a government job. He had been preparing for 1 year, but he could not get any job. He did not lose hope. Yeah, preparing finally got recommended. मतलब उसने बार-बार तैयारी की। आपने लिखा क्या है? उसने किया क्या? अगर उसको नहीं मिली, यहाँ तक तो देखो आप ये देखिए, and could not get any job. यहाँ तक आप तो पुराना ही बोल रहे, he did not lose hope and kept preparing. आपका फाइनल जो भी एक्शन है वो लास्ट लाइन में आ रहे, फाइनली ही वाज रिकमेंडेड फॉर इंटरव्यू. So I think something which one need to look into this. Okay, very well written. I mean, I'm not reading अभी till now. I'm talking about this विजय ठाकुर. आपने बहुत अच्छे से मतलब वो फॉर्मेट फॉलो किया है तो let me take this story. In fact, I'll just give without even reading. I'm giving like let me see how you written also. Number of character 3, mood positive, age okay, male 17, male 22, and female 45. Going to give ND examination. Ronak 17-year-old lives in Kalyanpur under Kanpur, studies in class 12, preparing for ND. It was his ND examination. Next day, packed all essential to write examination. Examination center was Lucknow, 1 from his home. Reserved a seat of train, which was scheduled of 8 o'clock from Kanpur Central. Before moving out from home, he took blessings of his family member. His mother gave him sweets to eat as it is auspicious ritual before doing some work. His brother went to station to teach him how to and to drop him at the train. I think he just want to see like this. And Sonak reached examination center and give examination. Returns home. He also cleared examination successfully. And next week he's going to AFSB Varanasi for interview. Now, देखो आपका विजय द वे यू आर रिटन इज वेरी वेल आई मीन दिस इज हाउ द फॉर्मेट इज आपने हर चीज को फॉलो किया है बट इफ यू आस्क मी एडवाइस हाउ यू कैन improve here further and in fact it's require improvement because आप जो प्लानिंग दिखा रहे हो ना अपना वो ट्रेन तक जाना एग्जाम सेंटर तक पहुंचना डेट विल आल्सो कि somebody will drop you say you goodbye right मदर स्वीट्स दे रही हैं and all these rituals is happening and all बट आपका जो हार्ड वर्क है या आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज आप दिखाना चाहते हो वो मुझे यहाँ कहीं नहीं दिखाई दी सो आई मस्ट से दैट यू नीड टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स आप लाइक गोइंग टू गिव एंड एग्जामिनेशंस एंड हो सकता है आपने एक्शन में स्टार्टिंग में बता दिया मुझे पता लग गया लेकिन प्रिपेयर कैसे किया मे बी यू कुड हैव फोकस ऑन दोस थिंग्स और मे बी समवेयर विद आई कुड टू अंडरस्टैंड यस ये हीरो हीरो टाइप है यहाँ पे हीरो का सब हेल्प करने में लगे हुए हैं हीरो का एग्जाम है पूरा घर लगा हुआ है भाई है मम्मी है everyone is working and then he just came back returns home and finally just got clear उसने क्या किया क्लियर करने के लिए वो नहीं आ रहा है सो आई थिंक दैट आई मस्ट से कि थोड़ा ध्यान देना है न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम सीकर राजस्थान विक्रम प्रिपेयर ओके हम पढ़ रहे हैं अभी डेविल मोनू क्या खतरनाक नाम लिखते हो बच्चों आप लोग हैं डेविल मोनू हितांशु फैक्ट okay, Vikram preparing exam give 3 attempt of return, 2 attempt of SSB entry. The second attempt he was recommended for NDA. And this was the last attempt for NDA, but he worked hard and he succeeded in the last chance. देखो आप फिर वही कर रहे हो and he came to this was neighbor girls लिखे auntie and uncle and auntie give blessed him and auntie talks about NDA and Vikram tells about NDA and something like I will not say ये इतना ही कंफ्यूजिंग है डेविल मोनू जितना तुम्हारा नाम है डेविल मोनू ऐसी ये स्टोरी आपने थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर दिया है, कहीं और चला गया है। लेट मी सी अभी अच्छा लॉट्स ऑफ पीपल आर कीप राइटिंग कि सर हमारा स्टोरी नहीं पढ़ा गया। अच्छा डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड और डू नॉट गेट आई मीन डोंट फील बैड कि मेरा स्टोरी नहीं पढ़ा गया।
आई थिंक व्हेन वी रीड सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, उसमें कहीं न कहीं आपका स्टोरी से कुछ ना कुछ रिलेवेंसी आता है और आप सबके लिए कोई टेक अवे होता है, कि कैसे आप अपना स्टोरी को ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, व्हाट इज़ द चेंजेस यू शुड ब्रिंग आउट इन योर स्टोरीज़ एंड ऑल। अगर आप ये सब देखोगे तो आई थिंक यू विल गेट ए पॉजिटिव फीडबैक। डू नॉट जस्ट स्टक टू मेरा स्टोरी क्या है। बहुत सारी ऐसी स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज आप ऐसा लिख रहे हो, कल को टुमारो यू मे थिंक ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। तो जो गलतियाँ हो रही हैं, इनफैक्ट आई ट्राई टू ब्रिंग आउट सो मेनी मिस्टेक्स इन द स्टोरी, नॉट बिकॉज़ कि आप लोग अच्छा नहीं लिख रहे हो या गलत है, कुछ खराब है या ड्वेलिंग ऑन टू दैट नेगेटिव पार्ट, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आप जो गलती किसी ने की वो आप आगे ना करो। एंड कई बार जो अच्छा होता है आई आल्सो ब्रिंग इट आउट, जैसे पीछे, ताकि द वे इट इज़ रिटन वो अच्छा है। या ओके, थीम जैसे ऑर्गेनाइज नवरात्रि फंक्शन, एंड आई कीप टेलिंग कि थीम थोड़ा रिलेवेंट होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि द वे यू हैव रिटन स्टोरी, द एक्शन। ओके, सीमा 35, झलक 9258। ओके, यू रिटन सीमा 35 ईयर ओल्ड, टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय इन कानपुर। अब आपका, अगर देखो, इफ यू आर ए, maybe if it's at the rate of झलक, if you are a girl, then I still go ahead with this. Otherwise, if I found it a bit difficult, to adjust with this है कि आपका हीरो 35 ईयर ओल्ड है। इट्स नॉट बिकॉज़ 35 ईयर ओल्ड नहीं हो सकता, बट आपके एज ग्रुप का ज़्यादा बेटर सूटेबल रहेगा। She wanted to organize a function on Navratri, so she, अगर if you are a girl and you're taking it as a hero, I still go ahead, ठीक है, 35 is not a big wo, you can go ahead. She firstly made the list of work, then she distributed work between her son and husband. She told, अच्छा, पहले ही काम बांट दिया, खुद करने से पहले ही बांट दो भाई काम। She told her husband that he invited priest and all neighbor, and she along with her son made arrangements. She went to market and bought all necessary items like fruit, sweets, worship ingredient, decorative item. Then she came back to home and firstly she decorated her chapel and establishing the idol of Ma Durga. Then she made blessed food for guests. When all the people came, they did worship. I mean, there's no big takeaway. There's no. She was thankful to her husband and son for support and organizing this wonderful day. लेकिन एक बिगर पिक्चर मुझे नहीं देखने को मिल रहा है कि यस, दिस इज वेयर आई कैन से कि भाई ये बच्चे ने इस चीज को लेके आया है। देखो, फेस्टिवल हो सकता है, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, एनीथिंग इट कैन बी रिलेवेंट टू दिस, बिकॉज इसमें दिख रहा है कि द लेडी इज गिविंग समथिंग, ये हाथ में कुछ है, तो दिस बॉय में बी कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, ऐसा भी हो सकता है। एंड इट नंबर ऑफ कैरेक्टर, वन इज सेलिब्रेटिंग समथिंग, आपका एग्जाम आ गया, यू मे बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, और मे बी यू जस्ट केम हेयर, or parents, you're sharing this news with the parents, and then you're very happy about it, some kind of a result and all. But किसी भी चीज में, whatever theme you decide or you take, how you go ahead with this theme is more important, कि आपने वहाँ क्या एक्शन लिए। मुझे कुछ तो दिखाओ, मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगी, ऐसा अगले 5 दिन के लिए मुझे इसको रखना है, पीपीडीटी में क्लियर है। तो समटाइम्स सिंपल स्टोरी रिक्वायर very simple picture, require a basic things, just keep selling some actions. I'm not saying they're very bad action or something, but it could have been a more detailed something. आपका काफी सारा स्टोरी क्या होता है, आप सोचते हो और एकदम आपको मिल जाता है अगली लाइन में, वो नहीं होना चाहिए। एंड जब आप प्लानिंग भी कर रहे हो, सपोज दुर्गा पूजा, और किसी एक ने लिखा था गणेश पूजा, थोड़ा बिगर लेवल पे, लाइक सपोज आपने सोसाइटी लेवल पे अगर आप कर रहे हो, तो विच ऑल बिग एक्शंस, थिंक अबाउट इट, ऑल दोस अरेंजमेंट, यू से मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट। व्हाट इज दिस नेसेसरी अरेंजमेंट, आई वांट टू नो ना, आपका दिमाग कैसे चलता है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि नेसेसरी अरेंजमेंट क्या है, वो दिखाओ ना। उसी से मुझे पता लगेगा कि आपका दिमाग कितना है, विच ऑल फैक्टर यू आर कैटरिंग व्हाइल यू आर अरेंजिंग अ फेस्टिवल और यू आर ऑर्गेनाइजिंग सम इवेंट। तो आप क्या क्या फैक्टर मतलब ध्यान में रख रहे हो, टू ब्रिंग आउट दिस दैट मच बेटर। सेम अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करो, जैसे नीचे लिखा गोइंग फॉर स्टेट लेवल मॉडल एग्जीबिशन, with strategy, choose 5 good students from the lead the project. They made and through transition to it. Blessing of spirit. वही देखो लास्ट में लिख लो, छोटा स्टोरी है। Let me come to this also. Sandeep was a 12th standard student studying in Purani Bazaar High School, Sirari. Once a physics teacher of his school was retiring, so he decided to organize a farewell party for him. Firstly, he wrote an application letter to the principal for permission to organize a party, got permission, divide the tasks, live, who will decorate the room, who will buy the cake, who will prepare the dishes for him, etc. He took the responsibility of preparing food with his few other classmates, since her mother was good in cooking and he used to learn cooking from mother since childhood. At home, he asked for masala recipe handbook for her mother and went to school with necessary item. With assistance of mess staff of his school, he prepared puri, kheer, shahi paneer for him. All of them offers poems, speeches for him, gifted him, enjoyed very much, took blessings, and all of them
वर वेरी हैप्पी, थैंक यू, जय हिंद। ओके, प्रिंस स्टोरी में अगर आप नरेट सही से करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, यू आर एबल टू जस्टिफाई, आई स्टिल से आई विल गो अहेड, बट नॉट वेरी क्लियरली आई विल से कि यस दिस इज द स्टोरी। देखो, आप सिर्फ उन्हीं एक्शंस पे मत अटके रहो। आई मीन किसी को सरप्राइज पार्टी दे दी, किसी को फेयरवेल कर दिया, किसी को यू नो एंड वो प्रीपेड एक आपका एक्शंस हैं, डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट, इसने ये बनाया, इसने ये बनाया, इसने बनाया। थोड़ा आपका एक ओरिजिनलिटी मुझे दिखनी चाहिए। लेट मी सी द लास्ट स्टोरी हाउ इट इज कम। And lots of people have make a story on pandal for Navratri Puja, or I mean on eve of Diwali we have the renovation of society. So theme are okay. Theme have no problem at all. The issue is the way you have organized. हाँ देखो, I have seen something in this story. Let me read this. Ashish Kumar. Renovation of society and distribution suites on eve of Diwali. Kapil was secretary of Mayur Apartment Society, New Delhi. Diwali was nearby and he decided to renovate the society. He shared this idea in society meeting, arranged funds and asked for volunteers. Arranged workers for repair and paintwork on holidays. He, along with volunteers, cleaned the society, placed new dustbin, installed CCTV, brought sapling from nursery and planted them inside society. After the cleanest drive, the society looked mesmerizing. Mesmerizing. Okay. Choose the correct word, correct place. With the remaining funds, he prepared sweets and dry fruit boxes on the day of Diwali, distributed them to all the apartment along with his brother, and asked them all to assemble in evening. Everyone assembled in evening had a memorable, wonderful experience. I'll go surely go ahead with this story. एंड इफ नरेटेड वेल, क्योंकि इसमें कुछ कई सारे एक्शंस हैं जो काफी डिटेल हैं। आई स्टिल गो अहेड विद दिस स्टोरी। ऑर्गेनाइज पंडाल फॉर नवरात्रि। ओके, राम 20% बीएससी फिजिक्स ऑनर्स फ्रॉम डीयू। अगर आप पंडाल कर रहे हो तो फिजिक्स ऑनर्स डीयू से उसका कोई लेना देना नहीं है। आई मीन एक्शन जो है, सॉरी, जो आपका इंट्रोडक्शन है, फिर वो उसी थीम पे उसी हिसाब से आना चाहिए। He decided to organize pandal and bhandara for Navratri festival. Before starting of this festival, visit to the house of his colony, invited them there. Contacted temple administration, convinced him for his plan. Started cutting slips. पर्ची काटना, ओके। Also got donation from his colony member। अब सब फोकस वही है। He contacted to the nearby pandal wala and under his supervision ensured it is built nicely by standing there. Installed the idol of Durga Ma with Pandit ji. Then he visited to the cook and booked him for everyday bhandara. He also फेल्ट हैप्पी ऑन सीइंग अदर। आप देखो, अब जब आप बात करते हो ना, आपने क्या-क्या करा ये बताइए? पर्ची कटवाई, ठीक है। वहाँ पे आप खड़े रहे, उससे बोला आप, लाइक इफ यू कंपेयर दीज़ 2 स्टोरीज़, यू विल फाइंड द मार्क्ड डिफरेंसेस, व्हेन यू से व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप इस चीज़ के लेके क्लियर हो ना, व्हाट डू यू वांट टू डू, दैट विल बी ए मच बेटर वर्ज़न एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगेन बिफोर वी फिनिश दिस today's session in story reading, I will take you to the again picture. See it clearly. You may organize, you may collect things, you may distribute something, but it should come out very well with the solid actions. What you want to do when you're organizing. It is just not like you planned, you distribute, you told, you ensured, you stand there. इसलिए क्या करना है वो चीजें तो बताओ। ऐसे मुझे दिखना चाहिए कि ओके ही अंडरस्टैंड कि अगर मेरे को एक पंडाल ऑर्गेनाइज करना है उसमें मुझे इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या वो आया? इफ इट हैज़ कम देन योर स्टोरी इज़ ओके, एक्सेप्टेबल। आप अगर बोलते हो मुझे एग्ज़ाम देने जाना है या किसी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए जाना है, अगर वो आपकी प्रिपरेशन क्या-क्या किया आपने एंड देन यू ऑफ आई अंडरस्टैंड व्हाइल ही वाज़ लिविंग फॉर दिस एंड फॉर दिस एग्ज़ाम हाउ ही प्रिपेयर्ड एंड व्हाट ही गॉट, देन अगेन इट्स अ गुड स्टोरी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई एम श्योर यू विल टेक केयर ऑल these थिंग्स इन योर टुमारोज़ स्टोरी एंड सी यू टुमारो।